1. Mutiny. बगावत. An occasion when a group of people, especially soldiers or sailors, refuses to obey orders and/or attempts to take control from people in authority. Synonyms: revolt, uprising, riot. 2. Agitation, noun. ذهني बेचैनी, ख्यालात का अलजे. A state of anxiety or nervous excitement. Synonyms: anxiety, perturbation, disquiet, distress, concern, trouble, alarm, worry, upset. 3. Havoc, noun. तबाही, उजाड़ना. Widespread destruction. Synonyms: devastation, destruction, damage, desolation, depredation, despoliation. 4. Colossal, adjective. शानदार, वसीओ अरीज, debacle. Extremely large or great. Synonyms: huge, massive, enormous, gigantic, very big, very large, great, giant, mammoth. 5. Worrisome, adjective. परेशान कुन, तशवीशनाक. Causing anxiety or concern. Synonyms: worrying, daunting, alarming, perturbing, trying, taxing, vexatious, niggling, bothersome. 6. Turmoil, noun. अफरातफरी, खलबली, हलचल. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. Synonyms: confusion, upheavals, turbulence, tumult, disorder, commotion, disturbance, agitation. 7. Patronage, noun. ताइद, हिमायत. The support given by a patron. Synonyms: sponsorship, backing, funding, financing, philanthropy, promotion, furtherance, help. 8. Accustomed, adjective. मानूस, रवायत, आदि. Customary, usual. Synonyms: customary, usual, normal, habitual, familiar, regular, routine, ordinary, typical. 9. Debacle, noun. शर्मनाक नाकामी, मुकम्मल शिकस्त. A sudden and ignominious failure, a fiasco. Synonyms: fiasco, failure, catastrophe, disaster, disintegration, mess, wreck, ruin, downfall. 10. Assert, verb. हक जताना, इकरार करना, दावा. State a fact or belief confidently and forcefully. Synonyms: declare, maintain, contend, argue, state, claim, propound, submit, posit. 11. Illustrate, verb. मिसालों से समझाना, रोशन करना. Provide a book, newspaper, etc., with pictures. Synonyms: decorate, adorn, ornament, embellish, accompany, provide artwork for. 12. Upheaval, noun. खलबली, इनकलाब अजीम, हलचल. A violent or sudden change or disruption to something. Synonyms: disruption, upset, disturbance, trouble, turbulence, disorder, disorganization, confusion. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Pakistan has encountered many difficulties in the past, including a near meltdown of its economy in 1968, a real or engineered breakdown of the political system, which ultimately led to martial law in 1958, 1977 and 1999, as well as security crises as seen in the public uprising of 1968, the mutiny in a part of the country in 1970, nationwide street agitation in 1977 and the war against terrorism from 2004 to 2017 fought almost across the entire country. We did suffer from a fatal blow during the political-cum-security crisis of the early 1970s when the country was truncated. But except for the tragedy of the fall of East Pakistan in 1971, we as a nation faced most of these crises valiantly. What we are witnessing today is the unprecedented convergence of all types of crises, economic, political, and security. We can add to this the unprecedented environmental havoc this country faced in the form of heavy rains and floods in 2022, and whose challenges continue to be faced even today in several parts of Balochistan, Sindh, and South Punjab.
As the world is smarting from the colossal damage caused by the COVID-19 pandemic and is facing a severe economic downturn, its impact is also bearing down on Pakistan, directly and indirectly. This is the state of what some people call polycrises being faced by Pakistan today. In a modern state, all crises are managed by the political leadership of the country. What makes the crises in Pakistan today extremely worrisome is the domination of the political crisis over all other challenges and the resulting distraction from finding solutions to the more important economic and security issues. The present crisis is defined by an extreme degree of polarization and deep divisions. Although Pakistan has seen political polarization in the past, as in the period leading up to the 1970 general election and the aftermath of the post-1977 election, the current fissures seem to be deeper than ever before. These divisions are no more confined to the political arena, they have spread to the judiciary and other sensitive institutions, while the civil bureaucracy has already been politicized for some time. What our polarized politicians are currently experiencing are withdrawal symptoms. Many people ask why there is so much political turmoil in the country and why nothing is being done by the political leaders and other powerful players to address the situation. A possible answer is that these, in large part, are withdrawal symptoms akin to a situation when long-time addicts are denied their favorite form of addiction. After withdrawal, the addicts feel restless, become dysfunctional, and turn violent, even suicidal. They are unable to appraise their condition, let alone make efforts to improve. They may scramble here and there, even beg, borrow and steal to get back to their addiction, but they are generally not in a position to seek systematic treatment of this condition. Most politicians in Pakistan have been addicted to the establishment's patronage, we can call it interference, for the last 70 years of its existence, as the recently retired Army Chief Gen Qamar Bajwa admitted in his farewell address. Politicians in Pakistan are not accustomed to taking independent decisions. Whenever they have tried to do that, and try they did, they were heavily punished and made examples of. President and later Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto probably enjoyed the greatest level of independence as he took over the government when the military was at its weakest immediately after the military debacle in Dhaka. He sacked a number of senior-most military officers and later fired the Army and Air Force chiefs too. He was too competent and experienced to be anything but independent. For this, he was made to pay dearly and was sent to the gallows. Benazir Bhutto tried to compromise, but probably not enough. Nawaz Sharif arguably tried the maximum number of times to assert his authority as prime minister but faced dismissal, imprisonment, exile and finally dismissal cum disqualification for life. Imran Khan was on the same page with the military for the better part of his 44-month reign as prime minister but was eventually punished for insisting on retaining his choice of Punjab chief minister and ISI chief. The politicians, whether in government or in opposition, conformed to this state of interference and almost always looked towards the establishment to dictate policy and provide firm support to implement it through all branches of the state. Only one example will suffice to illustrate the extent of the elected politicians' dependence on the establishment. Imran Khan recently confessed, sheepishly by his standards, that his government had been using agencies, read ISI, to get enough legislators in parliament to pass a law or even the annual budget. It now seems that with the change of guard in the army last November, the military has either started seriously practicing its promised dissociation from politics or significantly reduced it. The current political turmoil exists arguably because our politicians are not receiving their usual dose of interference and don't know how to manage their politics without the establishment's steadying hand. Both the government and opposition led by Imran Khan have openly approached the establishment to help them deal with the current impasse. The greatest question for democracy in Pakistan in 2023 is whether or not the establishment sticks to its current position of staying out of the political arena, even in the face of much pleading by politicians and the pressures of an economy near default. If they do, there will be chaos, upheaval, agitation, and even violence during the next 2 to 3 years. However,
the political class will learn how to handle its own affairs without a strong guide but within the parameters of the Constitution. Till then, it seems, we may have to bear with the withdrawal symptoms. The writer is president of the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान को माजी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिनमें 1968 में उसकी मईशत का तकरीबन ज़वाल भी शामिल है। सियासी निज़ाम की हकीकी या इंजीनियरिंग टूट फूट, जिसके नतीजे में बिलाखिर 1958, 1977 और 1999 में माशाल्लाह लगा। 1968 की अवामी बगावत, 1970 में मुल्क के एक हिस्से में बगावत, 1977 में मुल्कगीर सड़कों पर एहतजाज और 2004 से 2017 तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में देखा गया। हमें 1970 की दहाई के अवाइल में सियासी और सलामती के बहरान के दौरान एक मुहलिक धचके का सामना करना पड़ा था जब मुल्क को काट दिया गया था। लेकिन 1971 में सकूत मशरकी पाकिस्तान के सानिहे को छोड़कर हमने बहैसियत कौम उनमें से ज़्यादातर बहरानों का बहादुरी से सामना किया। आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो माशी, सियासी और सलामती समेत हर किस्म के बहरानों का बेमिसाल इम्तिजाज है। हम इसमें इस बेमिसाल माहौलियाती तबाही का इजाफा कर सकते हैं जिसका सामना इस मुल्क को 2022 में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत में करना पड़ा था और जिसके चैलेंजेस आज भी बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के मुताद्दिद हिस्सों में दरपेश हैं। चूंकि दुनिया कोविड-19 वबाई मर्ज की वजह से होने वाले भारी नुकसान से होशियार है और शदीद माशी बहरान का सामना कर रही है, इसके असरात बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसे कुछ लोग आज पाकिस्तान को दरपेश पोली बहरानों का सामना कर रहे हैं। एक जदीद रियासत में तमाम बहरानों को मुल्क की सियासी क़यादत के जरिया मुनज़्ज़म किया जाता है। जो चीज़ आज पाकिस्तान में बहरानों को इंतहाई तशवीशनाक बनाती है वो ये है कि सियासी बहरान का दीगर तमाम चैलेंजों पर गलबा है और उसके नतीजे में ज़्यादा अहम माशी और सलामती के मसाइल का हल तलाश करने से तवज्जो हट रही है। मौजूदा बहरान की तारीफ इंतहाई हद तक पोलराइजेशन और गहरी तकसीम से होती है। अगरचे पाकिस्तान में माजी में सियासी पोलराइजेशन देखने में आई है, जैसा कि 1970 के आम इंतखाबात और 1977 के बाद के इंतखाबात के बाद के अरसे में हुआ है, लेकिन मौजूदा दौरान पहले से कहीं ज़्यादा गहरी दिखाई देती है। ये तकसीम अब सिर्फ सियासी मैदान तक महदूद नहीं है, वो अदलिया और दीगर हसास इदारों तक फैल चुके हैं, जबकि सिविल ब्यूरोक्रेसी पहले ही कुछ अरसे से सियासत ज़दा है। हमारे पुरराज सियासतदान इस वक्त जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वो इनखला की अलामात हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मुल्क में इतनी सियासी अफरातफरी क्यों है और सियासी रहनुमाओं और दीगर ताकतवर खिलाड़ियों की तरफ से सूरत हाल से निमटने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है। एक मुमकिना जवाब यह है कि ये बड़े पैमाने पर वापसी की अलामात हैं, जो ऐसी सूरत हाल की तरह हैं जब तवील अरसे से नशे के आदी अफराद को उनकी पसंदीदा किस्म की लत से इनकार कर दिया जाता है। वापसी के बाद नशे के आदी अफराद बेचैन महसूस करते हैं, नाकारा हो जाते हैं और पुरतशद्दुद हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुदकुशी भी करते हैं। वो अपनी हालत का अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं, बेहतरी की कोशिश करना तो दूर की बात है। वो अपनी लत में वापस आने के लिए उधर उधर भाग सकते हैं, यहाँ तक कि भीख मांग सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं और चोरी कर सकते हैं, लेकिन वो आम तौर पर इस हालत का मुनज़्ज़म इलाज हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। जैसा कि हाल ही में रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के आदी रहे हैं, जिसे हम मुदाखलत कह सकते हैं। पाकिस्तान में सियासतदान आज़ादाना फैसले करने के आदी नहीं हैं। जब भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें सख्त सज़ा दी गई और उनकी मिसालें पेश की गई। सदर और बाद में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद सबसे ज़्यादा आज़ादी हासिल थी, क्योंकि उन्होंने हुकूमत संभाली थी जब ढाका में फ़ौजी शिकस्त के फौरी बाद फ़ौज अपनी कमज़ोर तरीन सतह पर थी।
उन्होंने कई सीनियर तरीन फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया और बाद में आर्मी और एयरफोर्स के सरबराहों को भी बरतरफ कर दिया। वो इतना काबिल और तजुर्बाकार था कि खुद मुख्तार होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी और फांसी पर लटका दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन शायद काफी नहीं। नवाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से अपने इख्तियारात को साबित करने के लिए सबसे ज्यादा बार कोशिश की, लेकिन उन्हें बरतरफी, कैद, जलावतनी और बिलाखिर ताहियात बरतरफी और नाअहली का सामना करना पड़ा। इमरान खान बतौर वजीर आजम अपने 44 माह के दौर हुकूमत में फौज के साथ एक सफ़े पर थे, लेकिन आखिरकार उन्हें पंजाब के वजीर आला और ISI के सरबराह की अपनी पसंद बरकरार रखने पर इसरार करने पर सजा दी गई। सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में, मुदाखलत की इस हालत के मुताबिक थे और तकरीबन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते थे कि वो पॉलिसी डिक्टेट करें और रियासत की तमाम शाखों के जरिए इसके नफाज के लिए मजबूत हिमायत फराहम करें। मुंतखब सियासतदानों का एस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार किस हद तक है, इसकी वजाहत के लिए सिर्फ एक मिसाल काफी होगी। इमरान खान ने हाल ही में एतराफ़ किया था कि उनकी हुकूमत किसी कानून या सालाना बजट को मंजूर करने के लिए पार्लियामेंट में काफी तादाद में कानून साज लाने के लिए एजेंसियों ISI का इस्तेमाल कर रही है। अब ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता नवंबर में फौज में इक़्तिदार की तब्दीली के साथ फौज ने तो संजीदगी से सियासत से अलहदगी के अपने वादे पर अमल करना शुरू कर दिया है, ऐसे नुमाया तौर पर कम कर दिया है। मौजूदा सियासी अफरातफरी यकीनी तौर पर मौजूद है, क्योंकि हमारे सियासतदानों को मुदाखलत की अपनी मामूल की खुराक नहीं मिल रही है और वो नहीं जानते कि एस्टेब्लिशमेंट के मुस्तहकम हाथ के बगैर अपनी सियासत को कैसे संभाला जाए। इमरान खान की क़ियादत में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ने मौजूदा ताकतों से निपटने में मदद के लिए एस्टेब्लिशमेंट से खुलकर राब्ता किया है। 2023 में पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों की जानिब से बहुत ज़्यादा इल्तिजाओं और डिफ़ॉल्ट के करीब मईशत के दबाव के बावजूद सियासी मैदान से बाहर रहने के अपने मौजूदा मौक़िफ़ पर कायम है या नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो अगले 2 से 3 सालों के दौरान अफरातफरी, एहतजाज और यहाँ तक के तशद्दुद भी होगा। ताहम सियासी तबका ये सीखेगा कि अपने मामलात को किसी मजबूत रहनुमा के बगैर बल्कि आइन के पैरामीटर्स के अंदर कैसे संभालना है। इस वक्त तक ऐसा लगता है हमें वापसी की अलामात को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। मजमून निगार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.